I have a few cliched questions before we end up the podcast. What do you understand by leadership? What is leadership? What is true leadership? How can one become a true leader? यार एक तो ये एक बहुत बड़ा डिबेट है कि वेदर लीडर्स आर बॉर्न और लीडर्स आर मेड. मेरा फर्म बिलीफ है लीडर्स आर बॉर्न. You cannot train to be a leader. You should have certain qualities of leader Mm-hmm. and then maybe, but leaders are always born leaders across class, caste, financial status, whatever. Narendra Modi has risen from shit. Okay, he has no leadership training. Many people born to many good families, they can do nothing. Army officers, let me tell you, 70% of them are not leaders. Okay, this is just the rank that they have, and in spite of intense leadership training, they cannot inspire confidence in their men. So I have firm belief, many people will disagree, it's all right, that leaders are born, and once you identify the leader, the more you shape him, own him or her, okay, the more you, because then you can finish. You, जैसे वो है यार, हर कोई गायक थोड़ी बन सकता है. Can you become? I cannot become a singer even if I train very hard. No, I firmly believe in what you said. I mean, because you are either born with certain traits or not, and these traits make it easier for you to pursue your leadership goals or whatever it is. I mean, like without those traits, it is still possible to chase whatever your leadership goals are, but then it will be much tougher. It will be like going against the grain, and you'll have to put in so much of hard work. तो वो यार वो जेरार्ड टोलेगन की ना एक लाइन है, एक पोयम है, उसका दूसरी लाइन हर जगह दिखती है, नॉट ऑल दोज हु वंडर आर लॉस्ट. बहुत सारे बैकपैकिंग हॉस्टल्स में हर जगह पर दिख जाएगी. पर उसकी जो पहली लाइन है ना, विच इज इवन मोर प्रोफाउंड, विच इज ऑल द गोल्ड डज नॉट ग्लिटर एंड नॉट ऑल दोज हु वंडर आर लॉस्ट. And this first line, all the gold does not glitter, is so profound that people do not understand. You know, the thing is that everyone wants to become gold. Gold is famous for its glitter, the weight. Yep. So everyone imitates. What is imitation jewelry? It looks like gold. So everyone imitates that. But the real gold does not actually glitter. It is dull. Yeah. If you polish it, maybe it will glitter. But the value is of glitter. So everyone copies that glitter and makes imitation jewelry. It is the same with people. They cannot be real gold, but they imitate what leadership means. They just come and wag. They just talk. But when you scratch the surface, they are absolutely nothing. They are shit. What is true about most of the politicians these days or the leaders. So all the gold does not glitter. So most of the leaders, they are just not interested in getting into that competition, the real men. Okay, but when the time comes, maybe, so it is something like that. So you can imitate, you can shout, you can do all this blah, 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 stuff like that, but you cannot be a leader. And it, from the childhood, you can see in your class, there will be someone. In your group, you can see her who's a natural. He's not even trying to impose, but people will follow him or her. So, and then you can polish. If he or she has a good mentor, then definitely. Because then there are various aspects of leadership that you can develop. Okay, the way you speak, the way you present yourself, the way, you interact, little bit of it. But then you have to be a diamond to be cut. You cannot be a piece of coal. So, and for me, leadership is, it's about the personality, that the aura that the person carries, which inspires people. What we were talking earlier, it is never the philosophies, it is never the ideas, it is that individual. Yeah. उस मंदिर की, दुनिया भर के मंदिर में शिव जी की वैल्यू है, विष्णु जी की वैल्यू है, भगवान बुद्ध की वैल्यू है. भले हमको उनकी फिलॉसफी नहीं समझ में आ रही, पर हम जब इमेज देखते हैं, सेल इज विद दिस थिंग. एंड देयर हैव बीन ग्रेट पॉलिटिशियंस, नॉट दैट all have been assholes, but you can find a lot of examples. People follow the person, and you are born with it. You have to. You can't become a leader. Of this, I'm very clear. But as a human being, I think. And why do you want to become a leader? There is a great this thing about developing leadership qualities. Why do you want to develop? It's a very, very tasking thing to be a leader. So when I was working in that company, I met a guy. And he had been working in that company for a very long time. And he had still not given leadership position. They were just, but मैंने बोला यार, you have been working here for so long. बोला मेरे को एक बार टीम लीडर बना दिया था इन्होंने 5 लोगों का. बोला आई गॉट पिस्ड ऑफ यार, उनकी छुट्टी, उनकी बीवी की प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम, बच्चा बीमार हो गया. मैंने बोला मेरे को नहीं चाहिए. I am good at my job. I don't want men under my command. मैं अपना काम करूंगा. So this is a very false notion that is being propagated. That develop your. क्यों भैया?
नहीं है हमारी फितरत लीडर बनने की। क्यों आप उसको लीडर बनाना चाह रहे हो? वो अपना काम करता है अच्छी तरीके से, एक आर्टिस्ट है या जो अपने सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा है, कुछ और काम कर रहा है, उसको नहीं बनना है लीडर। देयर इज नो ग्लैमर इन दैट इफ यू आर नॉट कट आउट फॉर लीडरशिप जॉब, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल थिंग। अब नॉर्मल तो डिसीजन ले नहीं पाते, अब 5 लोगों के बिहाफ में उनको सोच के कहाँ से, देन आई रियलाइज कि इट इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। सो वन शुड ऑलवेज रिकॉग्नाइज एंड रियलाइज कि यार मैं हूँ कैसा बंदा। ये लीडरशिप पे जो हल्ला मच रहा है भाई, कोई ऐसी जरूरी नहीं है, आप अपना काम करो, खुश रहो। Yeah, and like it shouldn't be desirable for everybody either. I mean, like last decade was a decade where I saw entrepreneurship and startup was being promoted as, like forget about your job, be an entrepreneur. I mean, like some people do better when they are working for an organization. I mean, like somebody who's working for in a good position for Microsoft will probably earn a lot more than 99% of entrepreneurs, and that's a fact. Right, so you don't need to be a leader. You don't need to be, I mean, like a startup founder or an entrepreneur, whatever is sexy at the time, just because it's cool to be. Yeah. I mean, that is where we always fault ना। वो जो तू एग्जांपल दे रहा है, तूने ये सेट अप वेरी एप्ट एग्जांपल, बिकॉज आई कांट बी एन एंटरप्रेन्योर यार। मुझे पता है मेरे को पैसे अपने समझ में नहीं आते, मैं क्या ही को बिजनेस चलाऊंगा, एंड आई ट्राइड दैट एंड आई फेल मिजरेबली, आई लॉस्ट ऑल माई मनी। So don't run after the glamour of things. You have to realize and recognize what kind of, and there is no shame in being a regular worker. There is absolutely no shame. दुनिया उनसे चल रही है यार। लीडर तो एक है ना, वो तो आगे की सोच रहा है, बाकी उसके पीछे दुनिया को भी तो काम करना है। Everyone has a very important role to play, and the most important thing is that you respect everyone for what he or she does. That is the most important thing. You may think, you may aspire, and those who want to aspire, those who want to play the glass ceiling, they will do it. है ना? पर तुम शुरू से मत ये सोचो कि यार अपन को तो इलॉन मस्क की बनना है और मैं तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बनी थी और मैं तो ये सब नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है। विथ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लर्न पेशेंस, डोंट जंप ऑन थिंग्स। व्हेन आई जस्ट अ पर्सनल एग्जांपल, आई डिड नॉट नो यार कि मैं क्या करूँगा। मुझे आज भी नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। मेरे को पैसे कमाने नहीं आते। मेरी कैसे किस्मत चल रही है वो मैं ही जानता हूँ, बस किस्मत चल रही है मेरी। पर मेरे को पता है मैं नौकरी नहीं कर सकता, मैं कुछ ये नहीं कर सकता। मैं लोगों के साथ अच्छा दोस्त हूँ, मैं 4 बातें उनके लिए अच्छी कर सकता हूँ, ईमानदार हूँ, पर काम में क्या करूँगा मुझे नहीं पता। पर समहाउ माई लाइफ इज गोइंग ऑन। पर अगर मैं उसी बैंड वैगन में ही शामिल हो जाता कि यार मेरे को तो कमाने हैं पैसे, कमाने हैं पैसे, तो मेरी जो ओरिजिनलिटी थी वो भी खत्म हो गई होती, ना मैंने पैसे कमाए होते और मैं भयंकर फ्रस्ट्रेशन में खत्म हो गया होता। सो द पाथ दैट आई हैव टेकन इज अ वेरी डिफरेंट पाथ, एंड सो इज फॉर एवरीवन। डोंट जंप ऑन व्हाट एवरीवन एल्स इज डूइंग, जस्ट होल्ड इट, give it some time, think about yourself, what you want to do, and as we mature we have a bigger picture of things, we see more. कई लोग तो ऐसे डम्बो भी होते हैं, मतलब आई डोंट रिलेट विजडम विद एज एट ऑल, कि विद एज यू विल बिकम अ मैन और वुमन ऑफ विजडम, ऐसा कुछ नहीं। बिकॉज इफ यू आर नॉट अप्लाइड योरसेल्फ, अ पर्सन इन हिज 30s who has been constantly applying himself or herself will have way more wisdom than person who has just wasted his life till 60 or 70.